Okay. So is the screen visible? Yes, it is. Okay, so let me first start by writing the topic name, selection एंड एवोल्यूशन। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम इस चैप्टर को दो सब टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक सिलेक्शन का और एक एवोल्यूशन का। इन योर आईजीसीएसईज यू माइट हैव हर्ड ऑफ द वर्ड नेचुरल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ऐसा ही? डिड यू हियर ऑफ दोस वर्ड्स इन योर Yeah, आईजी? yeah, yeah. या तो ये डिफरेंट तरीके के सिलेक्शन प्रोसेसेस होते हैं। कुछ आर इंटरवीन्ड या कुछ आर कंट्रोल्ड बाय ह्यूमंस। जैसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है जहाँ पे ह्यूमंस आर्टिफिशियली सेलेक्ट करते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स को और फिर उनको आपस में ब्रीड करवाते हैं। फिर नेचुरल सिलेक्शन, यहाँ पे द ओनली डिफरेंस इज इट्स द नेचर which is selecting कौन से organisms are able to produce more of their offsprings and survive compared to their counterparts या compared to their competitors. तो दैट्स ऑल अबाउट सिलेक्शन। एवोल्यूशन में हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व कैसे हुए, एवोल्यूशन का पूरा प्रोसेस कैसे हुआ। इसमें एलोपैट्रिक स्पीसिएशन, सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन, यू वुड हैव डन ऑल ऑफ दिस इन स्कूल ऑलरेडी, इज दैट राइट? The recent words you said, no, I haven't heard those. Like speciation something. या एलोपैट्रिक स्पीसिएशन एंड सिम्पैट्रिक I स्पीसिएशन। I haven't heard them yet. Okay, because they are like a really, really important part of the syllabus. If you just give me a Is it second. also a bit like mixed with the biodiversity chapter? Just a bit, not much. So let me just for a second open my notes for A2. So look at this. Chapter 17 में this is the syllabus. और इस chapter 17 में if you go to evolution तो फिर it talks about allopatric speciation and sympatric speciation। तो ये दो बहुत ज़रूरी parts हैं इस syllabus में for evolution जो हमें समझने होंगे। So we'll cover all of the things which are present obviously in our syllabus। सबसे पहले तो हम एक basic word की definition से शुरू करते हैं। And the first word we need to be able to define is the word variation. Whenever you say the word variation or whenever you hear the word variation, what definition comes to mind? Matlab, what do you think of when you hear variation? In terms of organisms, obviously. Like a difference in the same same kind of organisms? बिल्कुल सही. That's a very, very good answer. Differences between the same kind of organisms. In your syllabus, in your exams, variation की definition होगी that differences between the organisms, कौन से organisms which belong to the same species. तो belonging to the same species वाला जो part है is basically what you just said कि belonging to the same type or the same category of those organisms. तो variation की definition है कि ये differences हैं between the organisms and only between those organisms हम ये differences देख रहे हैं which belong टू द सेम स्पीशीज। इसका मतलब कि हम एक स्पीशीज से एक ऑर्गेनिज्म लिया और दूसरी स्पीशीज से एक और ऑर्गेनिज्म लिया और फिर हम उन दोनों को कंपेयर करें, दैट्स नॉट हाउ दिस वर्क्स। एक ही स्पीशीज को लेंगे और उसमें दो ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर करेंगे। अच्छा, इसमें क्या हमें फीचर्स जो हैं वो अलग अलग दिख रही हैं, क्या हमें ऑब्जर्वेबल फीचर्स अलग अलग दिख रही हैं, क्या हमें जेनेटिक फीचर्स कौन कौन सी अलग अलग दिख रही हैं। सो एवरीथिंग यू कैन फाइंड physically or inside of their cells which is different, that comes under कि अच्छा इन दोनों organisms में variation है। So differences between organisms belonging to the same species। अच्छा, let's take an example। Except lookalikes and जो twins होते हैं, except that all of the humans in the world are different from each other। So, for example, if you take, let's say, let's talk about parents. So, or talk about your siblings. So, if you take one of your siblings on one hand and the other sibling on the other hand, do you see any observable differences between these two siblings of yours? Yeah. And what are the differences you see? As in, do you see observable features? मतलब outer, मतलब bodily features different है या it's something else? The yeah, the external features. The external features are different.
इस तरीके की वेरिएशन को हम कहते हैं phenotypic वेरिएशन. So variation is of two types, phenotypic variation एंड जेनेटिक वेरिएशन. हम दो इंसानों को एक दूसरे के ऑपोजिट अगर खड़ा कर दें, वी कैन क्लियरली सी कि एक का स्किन कलर अलग है दूसरे से, हेयर कलर अलग है दूसरे से, आई कलर अलग है, हाइट अलग है, हैंड की जो विथ है वो अलग है, मेनी मेनी डिफरेंट थिंग्स. बट ऑल ऑफ दीज आर एक्सटर्नल फीचर्स, बॉडीली फीचर्स. So this comes under phenotypic variation. This is the first type of variation. You need to understand कि जब हम कहते हैं कि organisms के बीच में variation है, कैसे? Number one, either based on their external features, which is phenotypic variation. So this is the differences in the observable features of the organisms. अच्छा, अब एक बड़ी जरूरी चीज, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में फिनोटिपिक वेरिएशन आता क्यों है? एज इन, सारे ऑर्गेनिजम्स का हेयर कलर, सारे ह्यूमंस का हेयर कलर क्यों नहीं सेम हो सकता? सबका आई कलर, सबका यू कुड से स्किन कलर, सबका एवरीथिंग, व्हाई कांट इट बी एग्जैक्टली द सेम? व्हाई कांट एवरी ह्यूमन बी कार्बन कॉपी ऑफ वन अनदर? Because there are two factors which affect this phenotypes of humans or affect the external features of humans. Number one, genetic variation. एंड नंबर टू, द एनवायरनमेंट. अब हम देखते हैं दोनों केसेस में कि ये दोनों फैक्टर्स आखिर कैसे दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में फिनोटिपिक वेरिएशन पैदा करते हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. Suppose that there is a gene and this gene codes for the eye color. So let's call this a random gene. Let's call this gene A. So we have a gene A which codes for eye color. सो हम यहाँ पे मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस की बात करें, वी आर ओनली गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट वन जीन. इस जीन के दो एलील्स हैं. एक कैपिटल बी एलील, द डोमिनेंट एलील, व्हिच हैज द डोमिनेंट रेट ऑफ ब्लू आईज. एंड जो रिसेसिव एलील है, स्मॉल बी एलील, उसका रिसेसिव ट्रेट, मीनिंग इफ द रिसेसिव एलील इज एक्सप्रेस्ड, द phenotype becomes black eyes. क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि हर ऑर्गेनिज्म में इट्स द सेम जीनोटाइप कॉम्बिनेशन फॉर दिस जीन? No. बिल्कुल, इट्स नॉट पॉसिबल कि एवरी सिंगल ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड हैज द जीनोटाइप कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी या स्मॉल बी. एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ डिफरेंट वन, ईदर दिस और दिस, ऑब्वियसली एनी वन ऑफ द थ्री डिफरेंट पॉसिबिलिटीज. हर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिकली डिफरेंट जीनोटाइप्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस इज जेनेटिक वेरिएशन. सो जेनेटिक वेरिएशन हम आगे जाके हम इसको डिटेल में समझेंगे कि ये होता क्या है. बट फॉर नाउ यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंट अगर जीनोटाइप्स होंगे तो कैन वी कॉल दिस जेनेटिक वेरिएशन? Could you repeat the question? ये सो मैं ये कह रहा हूँ कि whenever we talk about genetic variation, can we link it to having different genotypes? Yes. So two people could have different eye colors. मतलब phenotypic variation. And if someone asks why is that? Because of genetic variation. Genetic variation मतलब कि दोनों के genotypes अलग अलग हैं. So being genetically different from one another means that you and the other person have a different genotype compared to one another. So genetic variation का मतलब होता है different genotypes. You could just use another word for the same thing. It's like synonyms. Genetic variation and different genotypes. It's the same thing. अच्छा, एक और एग्जांपल, स्किन कलर. स्किन कलर को अगर हम ले, उससे हम एनवायरनमेंट के फैक्टर को समझ सकते हैं. सपोज इफ देयर इज अ जीन दैट कोड्स फॉर स्किन कलर, it has a capital T allele, small t allele. Capital T allele, dominant allele, codes for a pale color, and then the small t allele goes for a darker color. Suppose if a person के अंदर जो cells हैं उसके अंदर जो जीनोटाइप की कॉम्बिनेशन है, that's capital T small t, what's the phenotype going to be? Pale or Pale color. dark? Pale color. अब environment कैसे एक रोल प्ले कर सकता है?
If that person is exposed to unnecessary UV rays, is exposed to unnecessary sunlight, टैनिंग की वजह से क्या स्किन का कलर चेंज होता है? Yes. So even though he or she was born with having pale skin color, because of the environment, it turned into a different phenotype. तो phenotypic variation यहाँ पे भी आई from pale to dark. कैसे? Not because of the changes in the genotype, but because of the environmental factors. So not only different genotypes, but also the environment, both of these factors play a role between two different organisms of the same species having different external features. अच्छा, any confusions until here? No, it's clear. Okay. अब हम थोड़ा और इसको डिस्कस करते हैं, ये पहले वाले फैक्टर को, जेनेटिक वेरिएशन, बिकॉज इफ यू लुक एट दिस, वेरिएशन हैज टू टाइप्स. Phenotypic variation, two organisms different from one another based on their external features. And genetic variation, two organisms different from one another based on their genetics and their genetic differences. तो ये टॉपिक का नाम है जेनेटिक वेरिएशन. अभी 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 हमने ये कहा था कि जेनेटिक वेरिएशन का तो मतलब होता है कि हैविंग डिफरेंट जीनोटाइप्स. इज दैट राइट? Yes. तो इसीलिए if in a P4 exam, and this comes up generally, and most of the time this does comes up as a part A, define genetic variation. So the way you're going to define this is that genetic variation simply means that there are differences in the DNA based sequences in the organisms. And again, which organisms are we talking about? Belonging to the same species? Yeah, different species does not matter. Same species. Same species. So in the organisms belonging to the same species, अगर हम ऐसे कोई दो organisms को आपस में compare करेंगे, अगर उनके DNA के base sequences में difference आया, इसका मतलब they are genetically different from one another. तो मैं ये same line यहाँ पे लिख देता हूँ कि different genotypes का मतलब होता है, it is the exact definition of genetic variation. So it's a one word definition for genetic variation. अच्छा, अब tell me this. If I write down the causes of genetic variation, wouldn't it be the same causes of different genotypes? It would. So, what I'm saying is, if I write down what are the causes of genetic variation, wouldn't it be the same as the writing the causes as to why there are different genotypes between different people? Yes, yes, it would. Okay. So, what I'm going to do here is write down causes of genetic variation slash causes of different genotypes. Okay, so this is a question from chapter 16. Could you tell as to why different genotypes होते हैं in different organisms? बहुत सारे Because reasons थे. mutation, crossing over, independent assortment, and random fertilization. Okay, so just a bit slower. सबसे पहला वाला क्या था? Mutation, Right, and then crossing over, crossing over. Right, number three, independent assortment, independent assortment, and random fertilization. random fertilization. अच्छा, in factors के अलावा, obviously we haven't talked about mutation rate, we'll just talk about it in a minute, but we have talked about these three. Number one, number two और number three के अलावा भी there is one factor जो कि हमने पढ़ा नहीं है, we're gonna study in this chapter. What about random mating? Isn't that also a factor जिसकी वजह से different genotypes हो सकते हैं offsprings के? Yes. So suppose if there is a male parent having a genotype of capital B, capital B. अब अगर कैपिटल बी का गैमीट है, और सॉरी जीनोटाइप है, इफ यू टॉकिंग अबाउट मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस, एंड यहाँ पे देयर आर टू
female. So let's say there is capital B, small b, and then there is small b, small b. If there is mating with the first female compared to with the second female, is there going to be different offsprings? Yeah, you could say different allele combination of the both offsprings. Could you repeat? Like, are you asking if there will be different offspring? Yeah, so if random mating होती है तो मतलब different sets of chromosomes नीचे pass down होते हैं, मतलब जो gametes होते हैं वो different होते हैं, तो क्या different allele combination बनेगा? Yes. Yes, so random mating is also another factor जिसकी वजह से organisms में different phenotypes, sorry, different genotypes आते हैं. So you can compare mating done by a male parent and a female parent. वहां से जो organism आया, या offspring आया, you compare that to an offspring जो कि एक different mating से produce हुआ था. दोनों cases में random mating हुई, offsprings have different genotypes compared to one another. Does that make sense? Yes, it does. ओके, सो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगेन ये मेटाफेज वन में होता है, क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज वन में होता है. फैक्टर्स वन टू फोर जो है, अब इनके बारे में I'm just going to write down a note here. What you need to understand is इन चारों फैक्टर्स में जो एलील्स ऑफस्प्रिंग को पास डाउन होते हैं, उन एलील्स की सिंपली रीशफलिंग या रिकंबाइनिंग करके ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप बना देते हैं. सो लेट मी राइट डाउन व्हाट आई जस्ट सेड. When the alleles are passed down to the offspring, these four factors, ये जो crossing over, independent assortment, random fertilization of gametes, and random mating, these four factors are only responsible for reshuffling या recombining of alleles to produce the offspring का genotype. Let's just take a moment to understand this. एक second to produce the offspring genotype. This is really important. ये चारों factors सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, और वो है या तो एलील्स को एक जगह से दूसरी जगह रीशफल करना, मतलब उनकी पोजीशन चेंज करना, या तो एलील्स को रिकंबाइन करना. सो फॉर एग्जांपल, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सिर्फ ये नहीं था कि जो क्रोमोसोम्स हैं हम उनकी सिर्फ पोजीशन चेंज कर रहे हैं ड्यूरिंग मेटाफेज वन, द होमोलोगस क्रोमोसोम्स. So let's say if you have this homologous chromosome ka pair, so this is the first pair, and then this is the second pair. अब ये फर्स्ट पेयर कोड्स फॉर कैपिटल बी, स्मॉल बी. दिस कोड्स फॉर स्मॉल बी, कैपिटल बी. अगर ये क्रोमोसोम इस क्रोमोसोम के साथ पोजीशन स्विच कर ले, then isn't there going to be different sets of chromosomes moving to opposite poles of the nucleus metaphase 1 में? Yes. तो यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया, क्रोमोसोम की पोजीशन चेंज कर दी. हमने क्रोमोसोम को रीशफल कर दिया, जैसे कार्ड्स का जो डेक होता है, व्हेनेवर प्लेइंग अ कार्ड्स गेम यू सिंपली जस्ट शफलिंग द कार्ड्स. यू आर नॉट ब्रिंगिंग इन अ न्यू कार्ड, यू आर नॉट डिलीटिंग और इंसर्टिंग अ कार्ड, यू जस्ट रीशफलिंग द कार्ड्स. उनकी पोजीशन सिर्फ चेंज हो रही है, और वही चीज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी करता है. अच्छा, क्रॉसिंग ओवर क्या था कि द पॉइंट वेयर द बाइवेलेंट इज फॉर्म, द chiasma, वहां पे आर्म्स ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड्स स्वैप प्लेसेस. तो क्या उसकी वजह से कांट बी से कि एलील सिर्फ रिकंबाइन हुए हैं इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस? Yeah. तो यहाँ पर भी कोई नया एलील प्रोड्यूस नहीं हुआ आउट ऑफ नोवेयर. You're just combining the alleles which you already have in a different way. You're not producing any new alleles. That's crossing over. That's independent assortment. Random fertilization. It's just हमें ये नहीं पता कि कौन सा गेमीट किस गेमीट के साथ फ्यूज करेगा.
But again, are we producing any new alleles factor 3 में या factor 4 में? Or is it just reshuffling या recombining of alleles? Reshuffling. Reshuffling या recombining, बिल्कुल. तो इन चारों factors में, again, I can just repeat this and I can phrase this better कि चारों factors में कोई नया allele produce नहीं हो रहा. It's just the same alleles being reshuffled and recombined. But now look at this mutation. क्या mutation की वजह से नए alleles produce होते हैं? So suppose, let's take an example. What was the gene responsible for blood clotting? Sir, could you repeat? I didn't hear you properly. Yeah, what was the gene responsible for blood clotting? The factor VIII gene, बिल्कुल. और एक नॉर्मल फैक्टर 8 जीन क्या प्रोड्यूस करता था? uh, like blood clotting could be possible. सो वो प्रोड्यूस क्या करता था, मतलब व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रोटीन जो वो प्रोड्यूस करता था? इट वाज आल्सो फैक्टर 8 प्रोटीन, या? Yeah, Yeah, and factor 8 protein यूज होता था in facilitating coagulation. And coagulation क्या था? Wherein it's just this weird sticker type की चीज which forms in the body or on the outer part of the body with the help of the body. मतलब कोई external mechanism नहीं होता. ये body का एक natural process है जिसकी वजह से वो form होता है और blood clotting होती है. अगर इस सेम जीन की म्यूटेशन हो जाए तो फिर कौन सा जीन प्रोड्यूस होता है? The recessive or uh, the dominant? the recessive. रिसेसिव तो नॉर्मली तो सिर्फ डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होता है. लेकिन क्योंकि म्यूटेशन हुई, डिड वी जस्ट क्रिएट अ न्यू एलील? क्योंकि रिसेसिव वाला पहले तो नहीं था. अगर म्यूटेशन नहीं होती तो वी वुड ओनली हैव द डोमिनेंट एलील. लेकिन क्योंकि म्यूटेशन हुई, दैट्स व्हाई वी नाउ हैव द रिसेसिव एलील. डज दैट मेक सेंस? Yeah, it does. Yeah, or you could take any other example. Let's say we talk about the Huntington's disease. Huntington's disease में recessive allele was the good allele. He was the good guy. He was the person जो कि Huntington's disease को prevent करता है. But again, mutation हुई, dominant allele produce हुआ, 36 से ज्यादा स्टटर्स आए या सीएजी रिपीट्स आए तो हंटिंगटन्स डिजीज डेवलप होने का चांस बढ़ा. अगेन, डिजीज क्यों हुआ? क्योंकि नया एलील प्रोड्यूस हुआ. नया एलील क्यों प्रोड्यूस हुआ? क्योंकि म्यूटेशन हुई. तो इन पांचों फैक्टर्स में से म्यूटेशन इज द ओनली फैक्टर जो कि एक नया एलील प्रोड्यूस करता है. बाकी सारे चारों फैक्टर्स में इट्स जस्ट रीशफलिंग ऑफ एलील्स जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन होता है. लेकिन how does mutation contribute to genetic variation? By creating new alleles. तो यहाँ पे I'm gonna write this down. New alleles are formed. So you could think of it like this. ये चार factors अलग तरीके से genetic variation cause करते हैं. ये factor अपने अलग तरीके से genetic variation cause करता है. So new alleles are formed. अच्छा जी. Now let's talk a bit more about mutation. This fifth factor. अच्छा, whenever we talk about the process of meiosis, हमें वो process तो पूरा पता है, right? Meiosis one, cytokinesis, meiosis two, cytokinesis, and you create four haploid cells from one diploid cell. लेकिन वो जो one diploid cell था जिसने इस process की शुरुआत की, what's the name of that cell? Do you know the name for that cell? It's a specific name जो हम use करते हैं. Any idea? Um, no, I'm Okay, so the cell that undergoes meiosis is called a germ cell. So let me write this down here. A germ cell. It's not the germs जो कि use होते हैं often with bacterial infections या viral infections के germ spread होंगे. No, this is a different germ which we're talking about. It's the name of the cell. Body में germ cells होते हैं और ये cells responsible होते हैं कि इन cells पर meiosis का process होता है और gametes produce होते हैं. So germ cell is a cell that undergoes meiosis. अच्छा,
अगर जर्म सेल म्यूटेशन अंडरगो करेगा, वही वाला सेल जो कि मायोसिस करने वाला था, अगर इसी सेल के साथ म्यूटेशन हो जाती है, तो न्यू एलील्स क्रिएट होते हैं, डिफरेंट जीनोटाइप प्रोड्यूस होता है, एंड क्या उसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन होती है? Yes. ओके, सो लेट मी राइट दिस हियर. If a germ cell undergoes mutation, उसकी वजह से न्यू एलील्स आर क्रिएटेड. ये चैप्टर बहुत ज्यादा लॉजिक पर बेस्ड है. इट्स चैप्टर 16 में बहुत चीजें याद करने की थी, ट्रिक्स, डायकोटोमस कीज, इफ यू वुड वांट टू यूज दैट. दिस इज ऑल लॉजिक. उससे क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, दिस इज ऑल लॉजिक. तो न्यू एलील्स क्रिएट होते हैं. जब न्यू एलील्स क्रिएट होंगे, सो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट जीनोटाइप. एंड डिफरेंट जीनोटाइप की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या थी? जेनेटिक वेरिएशन. ओके, लेकिन इसमें एक मसला है. सेल में या बॉडी में जब भी म्यूटेशन होती है, जिस भी रीजन की वजह से हुई भी हो, रैंडम म्यूटेशन, रेडिएशन की वजह से, वट एवर द रीजन, वी डोंट केयर अबाउट दैट, बट बॉडी में जब म्यूटेशन होती है, क्या म्यूटेशन जो चीज करती है, फॉर एग्जांपल रेडिएशन, डज इट पिन पॉइंट के कौन से सेल में हमें म्यूटेशन करनी है, या रैंडमली किसी भी सेल में हो जाती है? Random? रैंडम किसी भी सेल में म्यूटेशन हो सकती है. कभी कभार दैट टारगेट सेल कुड बी अ germ cell, अगेन इट्स अ रैंडम प्रोसेस. कभी कभार इट मे नॉट बी अ germ cell. तो उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं जो कि germ cells नहीं है, मतलब वो सेल्स बॉडी में जो कि मायोसिस अंडरगो नहीं करते. These cells are called somatic cells. Let me just go back to AS का chapter 5. Just give me 1 second. Yeah, ये अभी अभी I'm just teaching a student chapter 5, so just look at this. In our body, there are two types of cells: somatic cells and germ cells. Germ cells meiosis undergo करते हैं और उनसे gametes produce होते हैं. Somatic cells are all of the other cells except the germ cells. तो वो cells basically जो कि meiosis undergo नहीं करते. So is it clear the differentiation between germ cells and somatic cells? Yeah, is it still not just a bit clear? Can you hear This, me? yeah, yeah, I can. I'm so sorry. I was speaking, but my voice wasn't coming through. Like Oh, this okay. germ cell, yeah, this is clear. Yeah, so germ cell and somatic cells, the difference between them, that's also clear, yeah? Yeah, yeah, it is. ओके, अब अगले पॉइंट पे आता है. अगर म्यूटेशन जर्म सेल में हुई हुई होगी, इसका मतलब कि वो वाला सेल जो मायोसिस अंडरगो करने वाला है, उसमें म्यूटेशन हुई, जिसकी वजह से अब गेमीट्स म्यूटेटेड प्रोड्यूस होंगे. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये म्यूटेशन का इफेक्ट विल बी पास्ड ऑन टू द ऑफस्प्रिंग, क्योंकि गेमीट्स ही म्यूटेट हो गए ना. Yeah. लेकिन कंपेयर दैट टू म्यूटेशन इन अ सोमैटिक सेल. अगर सोमैटिक सेल में म्यूटेशन हुई, इज दैट गोइंग टू अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड, मतलब ऑफस्प्रिंग? No. नो. उस म्यूटेशन का इफेक्ट विल बी लिमिटेड टू वंस ओन बॉडी, क्योंकि वो सोमैटिक सेल में हुई है. सोमैटिक सेल्स तो मायोसिस अंडरगो नहीं करते, वो सेल्स तो बॉडी में होते हैं. जैसे ही बॉडी की डेथ होती है, बंदा जस्ट डाइज अवे, देन दैट सेल जस्ट गोज अवे. इट डज नॉट ट्रांसलेट इनटू द ऑफस्प्रिंग, वो ऑफस्प्रिंग में नहीं जाता. तो उस म्यूटेशन का इफेक्ट भी उस बंदे में ही रहता है. लेकिन अगर जर्म सेल में म्यूटेशन हुई, दैट इफेक्ट इज trickles down to the offspring. So that's just one basic thing you need to understand. अच्छा, अब बढ़ते हैं towards the two different types of variation. I know I just said earlier कि two different types, तो phenotypic और genetic variation होते हैं, but there are two other categories as well. Number one, continuous variation. And could you tell me the other type? Discontinuous? बिल्कुल, continuous and discontinuous variation. अच्छा, could you tell me what continuous variation actually is?
मतलब explain it to someone who has never heard of the term before. Just basically say. Like the data, it's present in like quantitative form. Like for Mhm. example, the height, the weight, and basically there is like not much difference between the values, the data values, and there is like a range, I think. Okay. And for रेंज भी discon होती है बिल्कुल. yeah, for discontinuous, it's like the data is present in the qualitative form. Like, for example, eye color and skin color, like that. And Mhm. basically, there is like a very large difference in like the uh like in the data values. For example, like either it's going to be one value or it's going to be other. Like for example, if it's blue, it can only be blue, not blue and brown. Like for example, for weight, they can still be a range. And like Okay. for example, in discontinuous, we can like plot a bar chart to show the data. Okay. And like Okay. for discontinuous, I think the data values are limited, while continuous can have like a huge range, and between the range you can get values like with really small differences, or like there's a wider range of data values possible. Makes sense. So basically the main difference is that कि continuous variation में एक बहुत बड़ी range होती है और discontinuous में नहीं होती है. Yeah. ऐसा ही? Yeah. So let's just start to understand this a bit more in detail. So all of the points, majority of the points, I would say 90% बिल्कुल सही है. कुछ points में थोड़ी बहुत इधर-उधर explanation की जरूरत है and we'll add on to that explanation while we discuss this. अच्छा, सबसे पहले तो let's talk about continuous variation. Continuous variation and discontinuous variation are both types of phenotypic variation. तो जब हम कह रहे थे कि वेरिएशन की दो किस्में हैं, phenotypic and genotype और सॉरी genetic, तो वो phenotypic variation is observable differences between organisms of the same species. phenotypic variation के अंदर भी दो टाइप्स हैं कि किस तरीके का phenotypic variation है, is it continuous या is it discontinuous. तो सबसे पहली चीज, continuous variation is a type of phenotypic variation. So each and every point you must understand, which I'm just going to write down here in a list key sort of format. Acha. Firstly, bilkul perfect the comparison which you made, the first point, कि continuous variation में the differences in the phenotype have to be quantifiable. They need to be quantitative. ऐसी चीज जो कि measure करी जा सकती है. So the differences in the phenotype must be क्वांटिफाइबल. मतलब इस तरीके के फिनोटिपिक डिफरेंसेस ना हो जिनको हम ये नहीं कह सकें कि ये ज्यादा है ये कम है. इफ यू कैन नॉट यूज दिस सिंगल सेंटेंस कि ये ज्यादा है ये कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो मेजरेबल नहीं है, वो क्वांटिफाइबल नहीं है. इंस्टेड वो क्वालिटेटिव है. दैट इज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन. सो इफ यू कैन यूज दिस सेंटेंस इन योर एक्सप्लेनेशन कि इस इंसान में ये फिनोटिपिक ऑब्जर्वेशन ज्यादा है, इस इंसान में ये फिनोटिपिक ऑब्जर्वेशन कम है, this is an example of continuous variation. So the differences in the phenotype must be quantifiable, yeah, in other words, measurable. Point number one. Point number two, distinct जो categories होती है ना phenotypes के बीच में, they must not be present. Let's take an example. अगर हम phenotype की बात करते हैं relating to blood groups, how many types of blood groups are there? There is A, Four. there are four. So what are the four blood groups? A, B, there's O, there's AB. बिल्कुल ए बी ओ एंड ए बी. एंड ये जो ए बी है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस. तो इस पूरे सिस्टम का नाम दे दिया, नेमिंग सिस्टम का साइंटिस्ट ने नाम दिया था ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम. अब इस सिस्टम में हमें चार डिस्टिंक्ट कैटेगरीज मिलती हैं
between the phenotypes of organisms. एक इंसान का A blood group होगा, दूसरे का B होगा, फिर the third person is going to have a O, and then the fourth is going to have AB. Is there anything in between these four blood groups? No. No, this is an example of a phenotype जहाँ पे distinct categories हैं. If that phenotype has to qualify for continuous variation, distinct categories must not be present. So meaning ABO blood group system is not continuous variation. The distinct categories must not be present. अब अगर डिस्टिंक्टिव कैटेगरीज नहीं होंगी तो फिर क्या होना चाहिए? इंस्टेड, एंड दिस इज पॉइंट नंबर 3, एक रेंज ऑफ फिनोटाइप्स होना चाहिए बिटवीन टू एक्सट्रीम फिनोटाइप्स. व्हाटएवर फिनोटिपिक ऑब्जर्वेशन यू आर टॉकिंग अबाउट, उसका एक एक्सट्रीम होगा और फिर एक और एक्सट्रीम होगा. फॉर एग्जांपल, यू आर टॉकिंग अबाउट द हाइट. अब हाइट, इज दैट अ क्वांटिफाइबल फिनोटाइप ऑब्जर्वेशन? कैन यू मेजर इट? No. We can't measure the height. Oh, yeah, sorry, the height, yeah. Yeah. वी कैन मेजर द हाइट. तो हाइट में अगर हम दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में हाइट का डिफरेंस निकालें, दैट्स मेजरेबल, कि इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट ज्यादा है. दैट्स द पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, डिस्टिंक्टिव कैटेगरीज तो है नहीं कि हम एक को शॉर्ट बोल दें, एक को टॉल बोल दें. एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं. एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट, कि एक बहुत बड़ा रेंज होता है हाइट्स का. किसी की हाइट 1.02 मीटर्स, 1.03 मीटर्स, 1.03334 मीटर्स. एक बहुत बड़ी रेंज है दो एक्सट्रीम्स के बीच में. So a range of phenotypes exist between two extremes. Obviously किसी भी चीज के दो extremes होते हैं, right? The starting and the ending. तो ये दो extremes की बात हो रही है. And number 4, many intermediates are present. So could you tell me what does intermediate mean? Intermediate का मतलब क्या होता है? Like it's the middle value for something. इट्स द मिडिल वैल्यू फॉर समथिंग. बिल्कुल सही. ऐसे बहुत से ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनकी फिनोटिपिक जो वैल्यूज होंगी, वट एवर फीचर यू आर टॉकिंग अबाउट, लेट्स से द हाइट, तो बहुत सारी हाइट्स विल फॉल इन द मिडिल. बहुत सारे इंटरमीडिएट्स होंगे. So many intermediates will be present. Agar if you find any phenotype which agrees with all four of these, this is an example of continuous variation. अच्छा, अब कंटिन्यूअस वेरिएशन कॉज कैसे हो सकती है ये भी देख लेते हैं. कंटिन्यूअस वेरिएशन कैन बी कॉज्ड, नंबर 1, ड्यू टू द इन्वायरमेंट. अब जब भी हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, आई यूजुअली जस्ट गिव वन एग्जांपल, राइट, ऑफ द स्किन कलर. दिस इज द मोस्ट easiest one to understand and explain. But there's another example जो हम ले सकते हैं. Let's say we talk about two plants. Plant number 1 and then plant number 2. So this line right here, you could simply assume कि ये plant की stem है. Obviously, I'm not just drawing the entire plant. This is the stem of the two plants. What difference can you see between these two stems? Like one is small and one is like one is shorter and one is taller. One is shorter and one is taller. Could you tell me the name of the gene जो कि responsible होता है stem elongation के लिए? We talked about this. Gibberellin. So the The LE name of the gene. gene, Yeah, yeah, the LE gene. LE gene. बिल्कुल सही. Gibberellin is the hormone. Yeah, you could say the hormone or the substance exactly. तो यहाँ पे what's the gene? यहाँ पे the gene is the LE gene. अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं. अज्यूम करते हैं हम कि ये दोनों प्लांट्स का जीनोटाइप था कैपिटल एल ई, कैपिटल एल ई, कैपिटल एल ई, कैपिटल एल ई. लेकिन अगर दोनों का जीनोटाइप सेम है तो फिर हाइट्स क्यों डिफरेंट है? क्योंकि पहले प्लांट को एक ऐसी जगह पर रखा गया था जहां पे इट वाज रिसीविंग लेस न्यूट्रिएंट्स. दूसरे प्लांट को एक ऐसी जगह पे रखा था जहां पे इट वाज रिसीविंग मोर न्यूट्रिएंट्स. नाउ टेल मी दिस, प्लांट्स की बीच में उनके जो स्टेम्स हैं उसके बीच में जो हाइट का डिफरेंस है, वर द जीनोटाइप्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट?
मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि ये phenotypic वेरिएशन, हाइट्स के बीच में डिफरेंस जेनेटिक वेरिएशन की वजह से है? कैन वी से दैट? Yes. आर यू श्योर? जेनेटिक वेरिएशन का मतलब क्या था कि डिफरेंट जीनोटाइप्स, क्या इनके डिफरेंट जीनोटाइप्स हैं? Oh no. नो, तो इनके तो सेम जीनोटाइप्स हैं। अगर सेम जीनोटाइप्स हुए दैट मींस दे आर जेनेटिकली द एग्जैक्ट सेम। जेनेटिक वेरिएशन तो है नहीं। तो फिर ये कंटीन्यूअस वेरिएशन आई कैसे? एनवायरनमेंट की वजह से। पहले वाले जो एनवायरनमेंट था उसमें कम न्यूट्रिएंट्स थे, दूसरे वाले में ज्यादा थे, तो दिस ग्रो टॉलर एंड दिस ग्रोड और रिमेन्ड शॉर्टर। इवन दो जीनोटाइप सेम थे, लेकिन फिर भी कंटीन्यूअस वेरिएशन हमें दिखी। This is one way in which continuous variation हो सकती है, which is due to the environment. Number two, continuous variation can also be caused due to something called polygenes. Now, have you heard about this word in school? Yeah. Polygenes. So, what does polygenes actually mean? Basically, the phenotype is affected by many genes. Could you just repeat? Your voice lagged a bit. Basically, the phenotype it's affected by many genes together. बिल्कुल. So the phenotype of the characteristic is affected by many genes. अच्छा, are these the same genes? या मतलब are they the alleles of the same gene या are they different genes? Different genes, तो क्या ये सेम लोकाई पर होंगे या डिफरेंट लोकाई पर? different loci. डिफरेंट लोकाई, बिल्कुल. So polygenes, let me just write down the definition, which is exactly as you said. Poly का word obviously मतलब होता है many. So polygenes, many genes. So we have many genes on different gene loci affecting the same phenotype या affecting the same characteristic. तो यहाँ पे अगर हमारे पास बहुत सारे जीन्स होंगे जो कि एक ही कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जेनेटिक वेरिएशन होगी। क्यों? क्योंकि इस तरीके के एग्जाम्पल में, इस तरीके की सिचुएशन में, क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द एलील्स इन ऑल ऑफ दीज जीन्स हैव सम सॉर्ट ऑफ इफेक्ट ऑन द phenotype? Yes, but it's gonna be like a small effect. इट्स गोना बी अ स्मॉल इफेक्ट, बिल्कुल सही। यहाँ पे हमने लिखा है कि मेनी जीन्स ऑन डिफरेंट लोकाई अफेक्टिंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक। लेट्स चूज द कैरेक्टरिस्टिक एज हाइट। बहुत सारे जीन्स होंगी जो कि एक ही कैरेक्टरिस्टिक या एक ही फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक व्हिच इज हाइट उसको अफेक्ट करेंगी। अब हर जीन के बहुत सारे एलील्स होंगे। एवरी सिंगल वन ऑफ दोज एलील्स बिलोंगिंग टू एवरी सिंगल वन ऑफ दोज जीन्स will have some effect, even if it is small, they will have some effect on the phenotype. और जब, so have you heard of the saying many cooks spoil the broth? Have you heard of that? Yeah. Yeah, so that simply means कि if you have many people or many chefs cooking the same thing, even if all of them are experienced, dish खराब हो जानी है. The dish is going to go bad क्योंकि it's many people combined, many different opinions combined. उसी तरीके से you could think of these alleles as the chefs. हर शेफ का अपना अपना ओपिनियन है, हर शेफ का या हर एलील का अपना अपना अफेक्ट है फिनोटाइप पे। जब हर कोई छोटा ही सही लेकिन अफेक्ट करेगा फिनोटाइप को, तो फिर डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स आएंगी। In that case, is there going to be a big range between the two extreme heights? Yes. ये क्योंकि बहुत सारे एलील्स अफेक्ट कर रहे हैं ना, तो कभी कभार कुछ एलील्स इस तरीके से अफेक्ट करेंगे कि ज्यादा हाइट हो जाएगी, कुछ एलील्स ऐसे अफेक्ट करेंगे कि कम हाइट हो जाएगी। नाउ इट्स नॉट जस्ट मोर और लेस। कभी कभार लेट्स से 1.02 मीटर्स होगी, 1.0223 मीटर्स होगी। एंड व्हाई इज देयर सो स्मॉल ऑफ अ डिफरेंस? क्योंकि यू हैव सो मेनी पीपल डूइंग द सेम थिंग, so many alleles affecting the same phenotype.
So in continuous variation, all of the alleles of all of the genes have a small effect. Now ये बिल्कुल सही बात है कि अफेक्ट हर किसी का बड़ा बड़ा नहीं होगा, हर किसी का छोटा छोटा इफेक्ट होगा. All of them are going to have a small contribution or a small effect on the phenotype. तो अगर हम हमारे इस एग्जांपल की बात करें, सिचुएशन की बात करें व्हिच वी वर टॉकिंग अबाउट अर्लियर, यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन की वजह से डिफरेंट हाइट्स होंगी, इवन तो यहाँ पे सेम लिया हुआ है, बट इफ यू टेक अनदर एग्जांपल जहाँ पे पॉलीजीन्स यूज हो रहे हैं, तो अब obviously you can have different heights in each different case you're talking about. अब हमारे जो न्यू एग्जांपल था जिसमें पॉलीजीन्स था, was the environment affecting the phenotype, the height? Yes. So इस एग्जांपल में the environment was affecting the phenotype. लेकिन if we take a new example जहाँ पे polygenes affect कर रहे हैं, so we are only talking about genetic variation. Does that mean कि environment भी एक effect play करेगा? No. No. So just let's take an example. Let's say I have a plant right here, and then I have another plant right here. अब इस प्लांट की दोनों की हाइट्स डिफरेंट है. अब प्लांट की हाइट इज द नेम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक या phenotype जो कि कंट्रोल हो रहा है बाय द पॉलीजीन्स. अब लेट्स टेक एग्जांपल्स ऑफ पॉलीजीन्स. लेट्स से वी हैव दिस फर्स्ट जीन राइट हियर. ये जो जीन है, लेट्स से जीन 1 कोड्स फॉर 2 एलील्स. The alleles this codes for is allele A and then allele B. Then you have another gene. You have gene 2. This codes for 2 alleles. You have allele C and you have allele D. Then you have another gene. You have gene number 3 coding for 2 alleles. This is allele E and then allele F. ये तीनों genes, if we अज्यूम कि ये एग्जांपल्स हैं पॉलीजीन्स के, ऐसे सारे जीन्स जो कि सेम कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट करेंगे और डिफरेंट लोकाई पर होंगे, ये सारे एलील्स एक ही कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट करेंगे. क्या यहाँ पे हमने एनवायरनमेंट को चेंज किया था? Did we like put this in less nutrients No, and this in no. more no. तो even this is what I'm trying to explain here कि even though environment भी अगर हम सेम रखें, genetic variation can still play a role. So it's not like environment and genetic variation go hand in hand कि environment का role होगा तभी genetic variation का भी role होगा, नहीं. Both of these are independent factors. Environment can also play a role, genetic variation can also play a role in terms of having continuous variation. So any confusions, any doubts until here? No, it's clear. ओके, अब हम एक आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि इस टॉपिक से बहुत ज्यादा आता है. एंड दिस इज व्हाट इज द जेनेटिक बेसिस ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन. तो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि कंटिन्यूअस वेरिएशन जो होती है विच इज अ टाइप ऑफ phenotypic वेरिएशन, हाउ कुड यू एक्सप्लेन दैट इन टर्म्स ऑफ genetics, as in genetic basis. So any idea on how would we explain this? You just have to summarize all of the points जो हमने genetic variation के बारे में पढ़े थे. So like basically we're gonna talk about the polygenes. So like the phenotype Hmm. is affected by many genes, and the phenotypes can be influenced by both the genes and the environment. And then Hmm. like different genes at different loci have like small effects on the phenotype. Small And effects on the phenotype. Yeah. Anything else? no, I think that's it.
Yeah, that is it. ये 3 मार्क का सवाल आता है and you just give all of the 3 points. So that's really good. सबसे पहला point is that you would talk about polygenes. And यहाँ पे you would write कि polygenes and then obviously the definition which you just said, many different genes on different loci affecting the particular characteristic. Point number one. सो पॉलीजीन मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ पॉलीजीन्स की डेफिनेशन दिस इज पॉइंट नंबर वन और मार्क वन। मार्क नंबर टू, हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि हर जीन का अंडर दिस पॉलीजीन की कैटेगरी बहुत सारे एलील्स हैं। सो ऑल ऑफ द एलील्स or you could say all of the different alleles will have a small effect on the phenotype. एंड देन नंबर थ्री, इवन दो, अच्छा ये अब थोड़ा पॉइंट बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है कि यहाँ पे जेनेटिक बेसिस की बात की है, तो हम फिर ये क्यों कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस वेरिएशन एनवायरनमेंट की वजह से भी कॉज हो सकता है। एंड दैट एक्चुअली मेक सेंस कि जब जेनेटिक्स की बात हो रही है तो फिर एनवायरनमेंट की हमें क्यों बात करनी है। इट्स जस्ट दैट द examiner prefers कि whenever you talk about continuous variation you just list down both factors even though it is still asking us about genetic basis, but we can still write this, which is as you said कि continuous variation can also be caused because of the environment or because of environmental factors. So these are the 3 points. Right. So that is the end for continuous variation. अब अगली क्लास में we will be figuring out and explaining in detail discontinuous variation, just a small part of that, and then I'll make a table ready before the class ताकि हमारा time waste ना हो, जहाँ पे हम continuous variation and discontinuous variation के बीच में differences देखेंगे. And that's the it of variation. फिर अगला topic will be evolution, and that's a really big chunk of the entire chapter. So, any confusions, any doubts for this class? Anything? So, I think you have none. So, in that case, could you just give me a summary of what we did today? Hello? I think it's the voice wala issue, per se.